In this lecture, we will discuss about Animalia. So the learning objectives are vertebrates and invertebrates, phylum Porifera, characteristics of phylum Porifera, and examples of poriferans. First of all, we will have a look on the classification of animals into different phylums and subphylums and classes. So, according to taxonomic hierarchy, the first rank is kingdom. So, the kingdom name is Animalia. Then we have two subkingdoms, subkingdom Parazoa and Metazoa. These are subkingdoms. Then we have different phylums in Parazoa and different phylums in Metazoa. Parazoa include phylum Porifera. Parazoa में सिर्फ एक ही जो है वो phylum आता है, that is Porifera, while Metazoa में आगे on the basis of their grades, there are two types of grades, grade radiata and grade bilateria. Some of the organism, it is basically depends upon symmetry. Some organisms are included in grade radiata and some are included in bilateria. In grade radiata, there is a phylum called Cnidaria, and in bilateria, there are many much phylum present. Next, our learning objective is difference between vertebrates and invertebrates. So first of all, तो मैं ये बताना चाहिए what is vertebra. All those organisms that have vertebral column, functional vertebral column in them, that are called vertebrates, while those organisms that don't have vertebral column in them are called invertebrates. So in kingdom Animalia, there are both kinds of vertebrates and invertebrate animals. Vertebrates have vertebral column while invertebrates don't have a vertebral column. We will discuss first about invertebrates and then vertebrates. So our first phylum is phylum Porifera. इसकी कुछ characteristics, it belongs to subphylum Parazoa, and these are basically simplest animals on earth. अगर पोरिफेरेंस के nomenclature को discuss करें तो basically Porifera is the combination of two Latin words. Porus, first word is porus, that means pore, and second word is fera, means to bear. So porifera is derived from two Latin words, porus meaning pore and fera means to bear. Means those organisms that have pore to bear in their on their body surface are called poriferans and are included in phylum Porifera. Means, and they are commonly called sponges. इनको स्पॉन्जेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्पॉन्जी नेचर. पोर्स होने की वजह से इनकी जो सरफेस एरिया है वो एक तो बहुत ही लार्ज हो जाता है एंड इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्पॉन्ज. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. अ स्पंज लाइक अपीयरेंस होती है इनकी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ phylum Porifera. The first character that we will discuss is about their diversity. Almost 5,000 species are included in phylum Porifera, and from these 5,000, 150 species live in fresh water and other species live in marine water. These are all aquatic. 150 out of 5,000 are freshwater and the remaining are marine water. Second characteristic is habitat. हैबिटेट मीन्स कि ये रहते किस तरह के इन्वायरमेंट में है, इधर इट इज़ इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और एयर. सो इन केस ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, ऑल पोरिफेरेंस आर इक्वेटिक. इक्वेटिक हैबिटेट है इनका. एज इस इक्वेटिक में दोनों तरह के हैबिटेट शामिल है, फ्रेश वाटर भी एंड सम आर मेरीन. मोस्टली मेरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज बॉडी सिमेट्री. Phylum Porifera is the first phylum of the animals, so it included the simplest animals present on earth. Simplest होने की वजह से they don't have body symmetry, so they are asymmetrical animals. वैसे किंगडम एनिमेलिया में दो तरह की मेजर सिमेट्रीज मौजूद हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री. बट इन केस ऑफ पोरिफेरेंस, बिकॉज दे इट इंक्लूड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, सिंपलेस्ट एनिमल्स, so they don't have any symmetry, they are asymmetrical animals. Because of asymmetrical nature,
दे डोंट हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बस बॉडी में सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, वो भी डिस्टेंस के ऊपर, देयरफॉर उनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती, और जब टिश्यूज ही नहीं होंगे तो उससे ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ना ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। सो फाइलम पोरिफेरा ऐसा फाइलम है जिसमें ना ही टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ना ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स, that is why they are called simplest animals. Next we will discuss about body layers. In poriferans there are two major body layers present. First one is pinacoderm and conoderm, and between these two layers a jelly like mixture is present, that is called mesenchyme, gelatinous mesenchyme. Outer layer is pinacoderm. It is called pinacoderm because it consists of pinacocytes. These are basically cells. तो pinacocytes ऐसे cells हैं जो combine होके pinacoderm बनाते हैं, and it is the outer layer in sponges, while the inner layer is conoderm. It is called conoderm because it consists of conocytes. These are also the cells. Conocytes की कुछ characteristics हैं, like they are flagellated cells, means they bear flagella, and they are also called collar cells. इनके अपेयरेंस जो है वो कॉलर की तरह की होती है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स लाइक दिस। इस तरह की इनकी अपेयरेंस होती है, और यहाँ पे इस एंड पे जो है वो यूं फ्लेजेला प्रेजेंट होता है। एंड बिटवीन दीज टू लेयर्स, आउटर पिनाकोडर्म एंड इनर कॉनोडर्म, अ थर्ड that is not basically a layer but a mixture. Between these two layers a gelatinous mesenchyme is present, and इस mesenchyme में प्रेजेंट होते हैं एमेबॉइडल सेल्स, और कुछ फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पे इम्बेडेड होते हैं, दैट एक्ट एज स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस, और उन फाइबर्स का नेम है स्पाइक्यूल्स दैट एक्ट एज स्केलेटन. Here is a view of sponge organization. This is the internal structure of the sponge. This is a pinacoderm, the outer layer, and it consists of pinacocytes, and this is the inner layer that is called conoderm. These are conocytes. You can see that कि इनकी जो appearance है वो collar की तरह की है, and they also bear flagella. This is basically flagella, and between these two layers there are some fibers embedded in it, and these fibers are called spicules, and they act as skeleton and a mesenchyme. This is the structure of a conocyte. This is a collar and this is a flagellum. Next characteristic is body pores. जैसे कि हमने इनके नाम में जाहिर है, these are pore bearing animals, so इनकी बॉडी पे कुछ pores होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ pores present है. But there are two special types of pores. It include ostia and osculum. ओस्टिया आर बेसिकली ये ऐसे पोर्स हैं जो जिन्होंने पूरी बॉडी को कवर किया होता है, लाइक ये वाले सारे पोर्स, दीज आर बेसिकली ओस्टिया. ओस्टिया आर द पोर्स थ्रू विच वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा इंटर द बॉडी. इसको याद रखने के लिए आप इस आई को यूज कर सकते हैं. आई मीन्स इन, इसका मतलब यह है कि मतलब पानी इन पोर्स के थ्रू अंदर आ रहा है, या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर आ रहे हैं. Osculum are the pores through which anything from inside moves outside the body. So there is a single osculum present in the sponge. As you can see, this is osculum, a single opening present on the interior side of the body. और इसको याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं U means out. Out mean मतलब बाहर जाना. So these two types of pores are present. Ostia जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर फैले हुए होते हैं, पूरी बॉडी पे मौजूद होते हैं, लेकिन जो osculum है वो सिर्फ पर पोर है जो एक्सटीरियर मूवमेंट के लिए जो है वो यूज होता है. Now we will discuss about the nutrition. न्यूट्रिशन से मुराद है कि स्पॉन्जेस जो है वो फीड किस चीज पे करते हैं. They have organic as well as inorganic nutrients. Organic nutrients में आ जाते हैं 20% of their food depends upon small animals, like that include zooplankton and phytoplankton, while 80% of the food is
डेट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। जैसे कि हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस हैं दे आर सिंपल, so they don't have any organ system like digestive system and other systems to digest their food. सो ये ज़्यादातर जो है वो डेट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ऐसे फूड जो ऑलरेडी मतलब जो रिमेनिंग होती है द फूड ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स प्रेजेंट इन सी एंड ओशंस, ज़्यादातर अपनी फूड ये वहीं से हासिल करते हैं। बहुत कम जो है वो ये फूड हासिल करते हैं जू प्लांक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की फॉर्म में, and that food is ingested by flagellated cells or quanocytes. So quanocytes जो है वो वहाँ पे ingestion होती है इस food की. This is an important MCQs. Now we will talk about their locomotion. If we talk about locomotion, इनकी डिफरेंट जो लाइफ स्टेजेस होती हैं उनमें लोकोमोशन के मेथड डिफरेंट है और मीन्स ऑफ लोकोमोशन भी डिफरेंट है। लाइक इफ वी हैव लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज इनकी मोटाइल होती है, मीन मोटाइल मीन्स इट इज एबल टू मूव फ्रीली। वाइल अगर हम एडल्ट स्टेज देखें तो एडल्ट स्टेज में दीज आर सिसाइल मीन्स अनएबल टू मूव। अगर मतलब एडल्ट स्टेज में ये मूव नहीं करते तो फिर ये ओशंस के बॉटम पे रहते हैं, वहां पे मौजूद जो रॉक्स हैं उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स में है लाइक वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सो ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि टिश्यू ऑर्गेनाइज ही नहीं होंगे, ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन भी नहीं होगी इनमें। तो मेजर जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स, इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। दे डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। अगर बॉडी में किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो दैट वुड बी डन विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर मूवमेंट से जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम नहीं है इनके पास, बट दे हैव न्यूरो सेंसरी एंड न्यूरॉन सेल्स एब्सेंट है, बट प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है इनके पास। न्यूरो सेंसरी एंड नर्व सेल्स जो है वो बॉडी में कहीं कहीं पे मौजूद होंगे और वो सेंसेशन करेंगे फूड वगैरह की एंड दूसरे केमिकल्स वगैरह की। स्केलेटल सिस्टम भी इनमें प्रॉपर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, बट स्पाइक्यूल्स इनकी हमने पहले भी बात की है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी में जो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। बॉडी कैविटी, दे हैव अ सिंगल बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पोंजियोसील। ये भी एमसीक्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इनकी बॉडी कैविटी का क्या नेम है। लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस ईदर सेक्सुअली एंड और एसेक्सुअली। सो इन केस ऑफ स्पॉन्जेस बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत से मेथड्स हैं लाइक वी हैव क्लोनिंग, budding, etc. But in case of sponges, the asexual method of reproduction is budding. इसमें both external and internal buds की formation होती है and internal buds are called gammules. और बर्ड फॉर्मेशन मतलब बॉडी पे बर्ड बनता है और नेक्स्ट वही बर्ड जो है वो डिटैच होके फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन they are hermaphrodite. Hermaphrodite are basically those organisms that have both male and female sexual structures, reproductive structures in the body. Same organism में दोनों जो है वो characters मौजूद होते हैं, male reproductive system भी and female reproductive system भी। hermaphrodite में एक special condition जो है वो exist करती है, protandry. Protandry is a condition in which both male and female reproductive structures are formed, but in case of protandry the male reproductive structures are formed first and followed by the formation of female reproductive system. मतलब ये कि इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में बनेगा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले बनेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। मेसेनकाइम के रीजन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन भी यहीं पे होगी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ब्लास्टूला भी बनता है इन लार्वल स्टेजेस, ये दो स्टेजेस होती हैं।
blastula formation, and larval stage. So these were the characteristics of the organisms including phylum Porifera. Lastly, we will discuss about the examples of sponges. First example is cycone. Cycone is basically a marine water sponge. की characteristic है, it is marine water. This is a cycone. You can see that yellow colored sponge और ये इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो पोर्स बहुत ज़्यादा पोरस है ये मेरीन वाटर में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज स्पोंजिला. इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. ये एग्जांपल जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन एमडी कैट एंड ऑल्सो एट एफएससी लेवल. दिस इज स्पोंजिला. यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो पोरस. इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद है और यहाँ पे ऑस्क्यूलम भी प्रोमिनेंट है. ऑस्क्यूलम इनके केस में जो है वो यहाँ पे बेसिकली नज़र नहीं आ रहा, टॉप व्यू से नज़र आएगा. ये बेसिकली ऑस्क्यूलम है और ये ऑस्टिया है. एंड स्पॉन्जिला के केस में ये जो पोर्स हैं पूरी बॉडी के ऊपर ये ऑस्टिया हैं. एंड दिस अ बिग लार्ज पोर at the upper side of the body, it is osculum, and these small pores are ostia. Next we have euplectilla. Euplectilla is basically a very beautiful and delicate sponge made up of glassy framework. It has a glassy framework. ये बहुत खूबसूरत होती है. इसको डेकोरेशन पीसेस में भी यूज़ किया जाता है. यू कैन सी दैट कि ये यूप्लेक्टेला है और इसमें ये ग्लासी फ्रेमवर्क है इसका. लास्टली वी हैव ल्यूकोसेलिनिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड Venus flower basket. It is also a very beautiful sponge. It gives a view of flower basket. That is why it is called Venus flower basket. एक और स्पॉन्ज है that is present in the regions of Antarctica. Scolemestra. Scolemestra jobeni. It is called is a barrel-like glass sponge. It is present in the regions of Antarctica and इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है. इट इज़ मोर देन अ मीटर टॉल. 1 मीटर से भी बड़ी होती है ये. दिस इज द व्यू ऑफ स्कोलेमेस्ट्रा जोबेनी. सो दिस वाज phylum Porifera.